But Dr. I have met many people in life, but I have not seen as humble a person as you are, because you just gave me, like, you said, okay, I'll come on your show like within 2 hours time, not a problem. And I was like, oh my god, I haven't done even research about Dr. Pura abhi mein, because मुझे ये होता है कि आपको शो पे लेकर आऊं तो I should know something about you, and the more I research into it, the more interesting it became, because आपने एक चीज बोली है कि विवेकानंद ने बोला था कि वो बुक पढ़ने के लिए, जो आप बुक की हम बात कर रहे थे, जो आपने अभी दिखाया था बुक का, तो like you, I'm also a learner. Like, I just want to learn more and more things in life. And the more I learn, the more I know that I don't know more. You know, I know less, I know that. तो आपने जो ये आग है डॉक्टर साहब, ये मतलब क्या बचपन से ही है कि आप जैसे आप, बिकॉज यू आर स्पेस साइंटिस्ट, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आपने सिक्योरिटी का उनका पूरा, मेरे ख्याल से पुलिस आप बोलते हैं मजाक में, बट आप उनका पूरा सिक्योरिटी का मेरे ख्याल से देख रहे थे आप सारा, और आप किताबें लिखते हैं और अपना ट्रेवल करते हैं, बट स्टिल लाइक यू हैव एनर्जी लाइक दिस, इट गिव्स मी लाइक, आपको इतनी एनर्जी मिलती कहाँ से? इज इट लाइक यू सेड कि 18 इयर्स तक आपने बस अच्छा खा लिया, वो चल रहा है, कि आप अभी भी अच्छा खाते हैं, खुद बनाते हैं, इसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है? See, eat very less. Mitam bhuktva. If I eat more, I will become more tired. Actually, people are eating more than what is required. Our anatomy is such, हमारा ह्यूमन एनाटमी ऐसा है, हम कुछ थोड़ा खाए तो भी बस है. I eat very less actually. But if you eat more, you become more tired because your body is working to digest it. Yes. And then what will happen? Before feeling hungry, you are eating again. And before that is digested better, you are eating again. So, हमारा Ayurvedic, I am from an Ayurvedic family. Okay. Basically, we were all Ayurvedic people who worked and cutting. See, how do you check whether somebody is an Ayurvedic? उसका you a finger देखना है. A finger में cut है तो you are an Ayurvedic person. You can see there is a cut there. And that cut is because we keep medicines and cut like this. And by default, a piece चले जाता. Okay. So, mitam bhuktva, eat very little. Shatam japtva, you speak more, talk more. Your breathing practice यही है. प्राणावान व्यानोधान समानामे शुद्ध्यंतम ज्योतिरहम ऋचा विपात्मा भूया संग स्वाहा वाक मन चक्षु श्रोत्र ज्ञान जिह्वारे दो बुद्ध्यागति संकल्पा में शुद्ध्यंतम. ऐसे चैंटिंग में क्या होता है, आपका ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाता है. दिस इज ए ब्रीथिंग प्रैक्टिस, दैट इज प्राणायामा. ये प्राणायामा ये नहीं है 1000 रुपीज में करो, ऐसा 1000 रुपीज में करो, वो नहीं है. चाइल्डहुड से वो करना है. नॉट व्हेन आफ्टर यू बिकम 60 यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. नो, दैट डजंट वर्क. चाइल्डहुड से ये करना है. When you do that from childhood, midam bhuktva, shatam japtva, padashatam shanai. Walk slowly. Don't be in a hurry. And when you want to run, run very fast. These qualities have to be maintained. If you do like this, vama bhage shayanasya, turn left and sleep. Bishagim kim prayojanam. Why do you require a doctor? So, what is to be done? Yesterday, मैं दोसा बनाया. साउथ इंडियंस डोसा खाते हैं ना. मेरा डोसा में क्या क्या था? वी हैड ग्रीन लीव्स. उत्तपम बनाया. आपको मालूम है ना उत्तपम, डोसा के ऊपर पूरा सब्जी डालते. उत्तपम पे मेरा गार्डन पे है, मेरा ग्रीन लीव्स बहुत है मेरा गार्डन पे. सो आई पुट ऑल द ग्रीन लीव्स एंड देन कैरेट एंड देन राइट. वो खुशबू कितना आता मालूम है? थोड़ा घी डालो उसके ऊपर एंड देन विदाउट, don't have to put a lot of oil, little, and then cover it properly so that both sides are baked properly. Onion दूसरे अलग से फ्राई करके थोड़ा मसाला डाल के उसके ऊपर डालने के बाद वो डोसा का पिक्चर भेजेंगे आपको लिए. पर्सनली आई विल सेंड यू दैट. मेरा खाने का मन करने लगा डॉक्टर. यूजुअली आई eat only 2 times and it's dinner time. I don't eat dinner, जैसा आपने बोला. The funny part is डॉक्टर साहब कि जो लोग बीमार होते हैं, because I deal with health issues और मैं डॉक्टर पांडे को लेके आता हूँ. The funny part is when people get sick, they ask हमें क्या खाना है. Yeah, definitely. I say don't eat anything. You're sick. Give the digestive system some rest. No, but what you do is while cooking, what are you doing? The smell आता, खुशबू आता है. Your intestine will start functioning. It is getting ready. टंग पे saliva आता है. You have to see the food for some time.
Then when you are seeing the food, what are you chanting? Bhagavad Gita में एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुदम ब्रह्मैव तेन गंधव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. मैं क्यों खा रहा है? It is not to fill my tummy. I am eating for ब्रह्मार्पणम. एक खाना मैं ब्रह्मा को दे रहा हूं. It's a yaga, yatna. Eating is a yaga. Eating is a ritual. And what is that purpose of eating? To make me Brahma. Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmagnau, Brahmanahudam. Hudam is the food what you are giving. And that Hudam I am giving to Brahma so that I will become Brahma tomorrow. Where is your Brahma? Hridaya Guhara Madhye Kevalam Brahma Matram. Inside my Hridaya there is a Brahma. And that Brahma will become active. I will become a creator. वो क्रिएटर होने के लिए आप कौन सी फूड खाना है? क्रिएटिव फूड खाना है. एंड तुम्हारा फास्ट फूड इज ओके. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फूड. एनी फूड यू शुड ईट. आई विल ऑल्सो ईट एनी फूड ऑन द फास्ट फूड ऑल्सो. मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हूं, बट डोंट डू इट एवरी डे. सी, इफ यू आर नॉट, देयर इज अ ग्रेट जोक. वन ओल्ड मैन हु सेज ही इज वेरी परफेक्ट, he goes to a doctor and asks, how do I live life longer? तो उसने पूछा है, what do you do? No, I don't take cigarettes, I don't drink, I don't eat this and that, I don't do joy भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. Then the question is, why are you living in this world? Correct. I see all the movies, I do all the magics, whatever possible thing which we do. LIFE, life क्या है? मेरा पूरा बुक्स लाइफ के बारे में. Life of Love, Rhythm of Life, Life Made Simple. Life Made Simple is a beautiful book which came out of Orkut discussions, philosophical discussions on Orkut. Orkut में आ गया है. And this is also life. What is life? LIFE. Live in full enjoyment. Live in full enjoyment. Learn in full enjoyment. And learning is not mathematics, physics, chemistry. I enjoy every subject which I learn. I learned tailoring when I was in 7th class. Okay. I can stitch well. Right? I do all the crafts. बच्चों को मेरे पास भेजे तो बस है. I will ask them what you want. You want song, you want dance, you want art, you want film. I will teach them how to make movies. मेरा पूरा वीडियोस मैं एडिट करके डाल रहा हूँ. So multimedia I teach. I am recording this. I have got one camera there, one camera here, another camera here. I am recording all this parallelly. And after that I edit audio video. See, I am enjoying. If I don't enjoy what I am doing, I will have to depend on somebody else. And assume that I don't know something. I go to them, ask them, learn. That is our job. That is our job. So we are 30 साल में ट्रिम करने के लिए बार्बर के पास नहीं गया. Only last year मैं खुद करते. मैं last year somebody wanted to act in a movie. I acted in movies, some short films. So वो short film के लिए उसको hair style अलग चाहिए. वो टाइम पे एक ही बार गया मैं. Last 30 years only once I went to a barber. Wow. Yeah, that's up. So आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो टॉपिक है उससे इधर उधर हो रहा है, क्योंकि यू हैव गॉट सो मेनी लेयर्स टू योर पर्सनालिटी. मैं ये कहता डॉक्टर साहब कि ऑफ कोर्स जब छोटे बच्चे आपके पास जाएंगे तो यू गॉट सो मेनी, यू गॉट एवरीथिंग, नॉट सो मेनी, कि उनको डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है, आर्ट सीखना है, कारपेंट्री सीखना है, स्टिचिंग सीखना है, कुछ भी आप सिखा सकते हैं. और बच्चों का जो दिमाग होता है, इट्स लाइक अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन. तो वैसे टीचर्स हमें चाहिए, हमें आपके जैसे. इसीलिए यू आर अ वेरी गुड टीचर. तो जो मेरा टॉपिक है, जो हमारे माँ बाप इस शो को बहुत देखते हैं डॉक्टर साहब, दे मोस्टली यंग मदर्स फादर दे वॉच दिस शो. सो माय पर्पस इज टू एजुकेट देम इन अ वे दैट दे कैन इनकलकेट देयर दिस टीचिंग इन देयर यंग किड्स, which will set up for life, which will set these young kids, set up them for life. Like आप अभी भी अपना सब कुछ कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम जो एजुकेशन जो बोल रहे हैं कि सिर्फ मैथ का टेबल याद कर लिया कि 2 times 5 is 10, 10 times 9 is 90, पाइथागोरस थ्योरम याद कर लिया. जो आपका सिस्टम है डॉक्टर साहब, हाउ टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन,
ये माँ बाप को थोड़ा सा इसके बारे में एजुकेट करें कि what kind of teachings they can give so that their kids can be set up for life instead of just learning the book knowledge. अजीत जी, आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली डॉक्टर साहब यूपी से हूँ, गोरखपुर के पास। और मेरी पढ़ाई सारी चंडीगढ़ में हुई है और चंडीगढ़ में मैंने जॉब इनिशियली 6-7 साल वहीं पे किया। उसके बाद से मैं 7 years कैलिफोर्निया में चला गया था और फिर ऑस्ट्रेलिया। I only crossed those places to go to Hamirpur. Okay. And I was in Himachal? Yeah, Hamirpur NIT. I went for giving some lectures. See, what I want is, I have got a education system. न्यू NEP में भी बोलते रहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन चाहिए, एज 3 to grade 3, फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड। कल भी मेरा एक लेक्चर था ऑन द टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर दिल्ली पे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम पे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उधर मेरा लेक्चर था NEP के बारे में, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बड़ा बात बोलते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। एक्चुअली इन इंडिया पूरा ऐसा पॉलिसीज बनाते रहते हैं, इट कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड। वो हमारा पुराना राधाकृष्णन का एजुकेशन पॉलिसी सून आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, वो ही है अभी भी। वो टाइम पे भी यूनिवर्सिटी नाम था, अभी भी है। LKG UKG नर्सरी पूरा नहीं था वो टाइम पे, बट देन पीपल एडेड बिकॉज दैट्स ऑल मनी मेकिंग पॉलिसीज। मेरा एक प्रोग्राम है ग्रैंडमा चाइल्ड केयर सेंटर। You can start this in a small place. कोई भी now who is listening to this, who is seeing this, if somebody has interest, I am ready to come there and spend 1 month there to establish such a small learning center where your children will become great artisans, great people who see, I only said live in full enjoyment. Another expansion है learn in full enjoyment. At least age 3 to grade 3, if you can become a social being, learn everything around you. See, you give me 300 young children, LKG बच्चों के लिए मैं कभी भी नहीं बोलते keep quiet. I keep asking what is the maximum number of times which a teacher in nursery, LKG, UKG क्या बोलते रहता है, keep quiet, वही है ना। I said I don't want anybody to tell keep quiet. I can make 300 children, you give me in front of me, they will keep quiet without telling keep quiet. वो meditation अलग बात है। वो बच्चों के लिए meditation, don't do that asking them to take breathe, sleep and all that. मैं क्या करते मालूम है, I do some jokes. Small needles देना है, एक thread भी देना है, उसको बोलो उसके अंदर ऐसा भेजो बोल के। They try. आप पहली बार एक बार ऐसे करके दिखाना है, ऐसा कर सकते बोल के। बट डोंट गिव दम द स्मॉल थ्रेड, लिटिल बिगर देना है, वो उसके अंदर नहीं जाना, घुसने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, ऐसा दे दो। वो करते ही रहते 6 hours, दे विल हैव पेशेंस टू डू इट। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते बच्चों का। गिव दम सच ए क्राफ्ट, देयर कॉन्सेंट्रेशन, साइलेंस विल बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बट डोंट आस्क देम टू कीप क्वाइट। इफ दे वांट टू शाउट, लेट देम शाउट। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू शाउट। Give them opportunity to learn different languages, different songs. हम क्यों why are we teaching songs, rhythmic songs हम बोलते रहते हैं ना बच्चों के लिए। We keep telling them London Bridge is falling down. बच्चों को सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, but do you think the teacher knows anything about London Bridge? No, they only know what is written in the book. But they don't think, the teachers are not able to think beyond what is in the textbook. They don't even ask a question, who has written that poetry? London Bridge kahan pe hai? I asked many teachers when I go to different countries for teaching, LKG, UKG teacher ko bhi main class lete. Not only university professors, not only mathematics. LKG में क्या rhymes है उसके बारे में भी मैं पूछते. But then they don't know. I said, students need not know, but as a teacher you are supposed to know ना। आप क्यों नहीं पूछते? Why are you not doing research? You can see DrTPS London Bridge. I have made a small program on that. So people don't ask this question. If teachers don't ask question, how do students ask question to teachers? So we want
create such teachers who are creative, who are artists, who have got this passion for teaching. If I can create some small 10 teachers, they need not be trained teachers, qualification छोड़ दो आपने, उसको qualification नहीं चाहिए, but are they ready to become good parents, good grandparents? घर में आराम से बैठा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है, उसको ऐसा 10 आदमी को दे दो, मैं एक 10 दिन का ट्रेनिंग दे देंगे, वो बच्चों को ऐसा ऐसा सिखाएंगे, they will become the best citizens in this country. Beautiful. And 7th, 8th, 9th, 10th class का पूरा maths, physics, chemistry, biology, English, if they know, they can become civil servants. Civil Service Prelims Handbook मेरा book है. And what is this book? Which book tells about 7th, 8th, 9th, 10th class पे, if you know something, then they will become good students. Many students will come to me say that I want to become a physics, I love physics. मैं क्या पूछते हो लोगों को? Tell me 3 physics people in this country. Tell me 3 physics famous people in this world. उसको मालूम नहीं है. See, your interest ऐसा है. मैं फिल्म्स को I love films. I love film songs. Immediately हम क्या पूछते? Do you know Amitabh Bachchan? If you are a film lover and you are from India and if you don't know Amitabh Bachchan, what do you think about that person? So if somebody says I love astronomy, astrophysics, space के बारे में मुझे पढ़ना है, immediately I will ask, do you know Narlekar? कौन है Narlekar? Oh, you don't know Narlekar? Then you are not a physics person. Why? Because teachers never heard about such scientists. So we need to change the attitude of teachers. If this attitude can be changed, I am sure we can make India the great country. I fully agree with you, Dr. Saab. And because मैं ये बोलता हूँ कि टीचर्स की वजह से सोसाइटी आगे फ्यूचर की बनने वाली है हमारे 100%. There is, if one profession you should look to improve upon is teachers, because वही टीचर्स आगे फ्यूचर में पॉलिटिशियन प्रोड्यूस करने वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं. तो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट मे कम, इट मे गो, बट मेरा डॉक्टर साहब जैसा आपका है, मेरा भी वही कि भाई पॉलिटिक्स को छोड़ो, नेताओं को छोड़ो, हमारे को अपना तो देखना पड़ेगा ना, हमारे को अपने बच्चों का तो देखना पड़ेगा ना, बजाय विक्टिम मेंटालिटी की. समाज भी खराब है, टीचर खराब है, वो खराब है, वो खराब है. द एक्शन नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम मी, आई. तो वो मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि समाज एक अच्छा टीचर पैदा करना शुरू करे? व्हाट शुड एज अ भारतीय मुझे क्या करना है कि एक हमारा समाज सुधरेगा जब मैं सुधरूंगा, लेकिन मैं कैसे और अपना चेन बनाना शुरू करूं कि हमारा समाज में अच्छे टीचर पैदा होने शुरू हों? तो उसके लिए एक तो आई डोंट नो, आप बताएंगे. See, that is why in 2009 I took my retirement when I was in Prime Minister's office. आपने बोला था मैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट पे I was with deputy director's post. It is a very good post in high position. Above me was director of I cannot tell the word, so I am struggling to find out the department name. You can guess in which department I was. Okay, I cannot tell the name publicly, but that is a Director General of Security in Prime Minister's office when Manmohan Singh was the Prime Minister, 2009. As I left my office, I went to a small village in Kerala. 90 children, 45 girls, 45 boys. 8th class. Why 8th class? From 8th class, I was thrown out being the worst student in a school. So I want to prove 8th class I can make. I was thrown out from a school, given a TC and said, you are the worst student, get out of the school. DrTPS. DrTPS. I went to the same school to give award for all the plus 2 children after 12 years. To 12 years. After becoming the scientist, I was called there to give a prize for all that. After. So this happens. Teachers are not good to. तो बच्चों को प्रिंसिपल को नहीं बोला कि भी हमें भी आप स्कूल से थ्रो आउट कर बाद में बोला, उसको मालूम नहीं था, वो नया प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल चेंज होते रहते, प्रिंसिपल चेंज होते रहते. दे हर्ड डॉक्टर टीपी शशि कुमार इज अ ग्रेट स्पीकर, मुझे बुला के उधर पब्लिक में डाला. उसके टाइम पे मैं बोला ये स्कूल में एक क्लास पे था मैं, आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल.
No, but the joke should have been, Dr. Saab, that that student should have said, throw us out so that we can also become Dr. No, TPS. no, that is a chance. I'll tell you what is essentially required is we need Yes. good teachers where you can make differences. So how do we make the difference? I wanted to show in the small place. I picked up 90 children. Communication skill is a big problem. English aate nahi mujhe. I don't speak English. I keep saying, you give me 40 children, I will take them to Goa beach में. और गोवा बीच में कौन रहता? सब दुनिया का सब लोग रहता है उधर. Which language they speak other than English? You communicate with them 3 days. Bas. It is not that you speak good English, but you get courage to speak English. First you need courage. Second only the language. What is lacking today is that courage to do things. मैं क्या किया? I started teaching. वो मलयालम मीडियम पे था, उसको इंग्लिश मीडियम पे डाल दिया. All the teachers, and I took such a student where every parents and teachers will say these students are useless. Useless bolte. I said there is no word called useless. Dr. TPS was useless when I was in 8th class. But I don't say I am useless. I am useless. Useless नहीं है. USCLESS नहीं है. USED. Useless. मैं आज से डिसाइड करेंगे I am going to use me and I become useful. So useless can be made useful if I am useless. कैसे करेंगे वो? You need a good mentor. You need a good technique. Why I became useless is because I have been put into a stream. Change that stream. Identify what can be done. So what I did, I made my 90 children who are all said, everybody asked me, आप क्या कर रहा है? मलयालम मीडियम में फेल होने वाला है, आप इंग्लिश मीडियम में डाल के क्या करेंगे? I said failing in English medium is more prestigious than failing in Malayalam medium. इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ. कैसे तो भी फेल हो रहा है. एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मुझे. क्या कर सकते? कुछ भी करो आप. Something you do, somehow you make them pass. ऐसा बच्चों को दे दो मुझे. I will show that in. I did not teach them whole. Maybe 1 year I spent with them, then they left them. They became 37 of them got A plus in all subjects in plus 1, plus 2, 10th class. One went to London to do PhD. 18 of them are MTech and got a good job. 6 of them got a job in Wipro education directly. So it is not very difficult to change the country. But only thing, you need an attitude, you need some people who can change. Policies, a policy नहीं था वो time पे. This was in 2010. Policies is now. Yeah. Right? Unless you can make small difference. So I am not just speaking blah blah blah. I do this. I make change in the people whom I have got students who are normal. आज भी था एक. आज भी मेरा YouTube में एक वीडियो में I published it because 6 months back some student, 3 months or 4 months back some student told me that I lost my paper, I failed in BTech, my house का no environment is such में पढ़ने के लिए कुछ मूड भी नहीं आ रहा है. I spoke to him only half an hour or 45 minutes I remember. वो वीडियो में नहीं डाला. But yesterday he spoke to me and said I passed my examination. अभी बोलो मैं क्या करना है आगे. That I have posted today in my YouTube. You can see that. He was so happy. OE time pe when I was discussing with him, I got a call from somebody else whom I met in Kerala. He said, I want to learn politics. I said, don't learn politics from Kerala. Kerala politics you already know. अभी क्या करो आप साउथ से नॉर्थ जाओ, जम्मू कश्मीर में जाके पॉलिटिक्स सीखो. He went for masters in जम्मू कश्मीर. कुछ भी केरला में भी एमए पॉलिटिक्स है, बट जम्मू कश्मीर एमए पॉलिटिक्स अलग होता है ना. कैसे तो भी अलग होता है. एटलीस्ट ही विल लर्न लाइफ. He will learn a different language. He will see the other part of the world. If you are not able to travel, then what are you doing? This is the only time. But he had lot of problems because OE problem था. वो time पे internet नहीं था. There was lot of problem. He has to travel 2-3 times. COVID आ गया. Life में बहुत ऐसे challenges रहना है life में. When you get such challenges, today he telephoned and told me he is going to UK in Leeds University for his masters. Amazing. International strategy management or something course he got. I said wonderful. वो भी fellowship मिला उसको. So I said you have to take this. Traveling is must. Children should travel. That is why I took my Kerala children to Goa.
You must travel, Doctor, talk to people. That is what yes. is essential.